Hi students. Now we'll be doing sums of probability based on playing cards. Before we do that, I will give you a brush up of about playing cards. In a playing card set, there are 52 cards: spades, clubs, hearts, diamonds. Spades are 13, they are black in color. Clubs are 13, they are black in color. Hearts are red in color, they are 13, and diamonds are red in color, they are also 13. So if you see 13 plus 13, 26 black cards, and 13 plus 13, 26 red cards. Face cards, Jack, Queen, King, they are called face cards. Sometimes they are also called picture cards. So 4 Jack, 4 Queen, 4 King, making it 12 face cards. So in that there are 2 black jacks and 2 red jacks, 2 black queens and 2 red queens, 2 black kings and 2 red kings, and finally there are 4 aces, इक्का. तो 4 इक्के, 3 गुल्ला, 3 रानी और 4 गुल्ला, 4 रानी और 4 राजा. Sum. Now the first sum based on cards is: a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of each event. If the card drawn is a red card, and secondly a card drawn is a face card. Now in cards ka sums, when you are doing sums based on cards, we will never be writing sample space and event in bracket. We will be only mentioning how many cards are there, and directly we will be writing n of s, n of a. So keep this in mind कि whenever you are doing cards का sums, you don't have to write sample space or event in brackets. You have to write n of s and n of a, but you don't have to write in brackets. So we start the sum. Solution: a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. Let S be the sample space. So here we are writing let S be the sample space. N of S is 52. Event A, the card drawn is a red card. So we are writing the event. Then we just mention in a card there are 26 red card. तो 26 red card होते हैं एक पैक में. तो n of a 26. तो probability of a क्या आएगा? फॉर्मूला के हिसाब से n of a अपॉन n of s. n of a 26 है, n of s 52 है. ऊपर नीचे लिखो 26 1 जा 26 2 जा. तो probability of a कितना आया? 1 upon 2. Second event, the card drawn is a face card. तो in a pack there are 12 face cards. 4 राजा, 4 रानी और 4 गुल्ला. तो 12 face cards. तो n of b 12. Probability of b is n of b upon n of s. तो 12 upon 52. 4 3s are 4 13s are. तो 3 upon 13. तो ये आंसर. Probability of a card drawn is red card is 1 upon 2. And that of the card drawn is face card is 3 upon 13. और एक सम है प्रैक्टिस सेट 5.4 of on cards only. Fifth sum: a card is drawn at random from a pack of a well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ace, a second a spade. Starting the same way रहेगा. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Let S be the sample space, n of s 52. अभी event क्या है? Ace. Event A is card drawn is a ace. तो in a pack there are 4 aces. 4 इक्के होते हैं. तो n of a is 4. तो probability of A is equal to n of a upon n of s. तो 4 upon 52. तो 4 1s are 4 13s are. तो probability of A is 1 by 13. Event B is card drawn is a spade. Spade है वो 13 spade होते हैं 13. In a pack there are 13 spades. तो n of B is 13. तो probability of B is n of B upon n of s. 13 upon 52, 1 upon 4. Answer: the probability that the card drawn is an ace is 1 by 13 and that the card drawn is a spade is 1 by 4. और भी सम आ सकते हैं. तो at least you got an idea कि how sums based on cards are solved. Now we come to the next few types of sums, easy ones. So here also we will be not writing the sample space in sets form. We will be writing just the numbers. In a hockey team there are 6 defenders, 4 offenders, 1 goalie. Out of these, one player is to be selected randomly as a captain. एक प्लेयर को कैप्टन बनाना है.
find the probability of the selection that कि the goalie will be selected as captain and second is a defender will be selected as captain. तो सॉल्यूशन में पहले टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स में ऐड करो 6 + 4 + 1 11 प्लेयर्स हैं. फिर एक्सपेरिमेंट क्या है, 1 player is to be selected randomly as captain. Let S be the sample space, n of s 11 जो टोटल प्लेयर्स है टीम में. इवेंट A that goalie will be selected. तो there is only one goalie तो n of a 1 आएगा. Probability of A is n of a upon n of s. तो probability of A is 1/11. Event B defender will be selected. तो there are 6 defenders. तो n of B 6 आएगा, 6 defenders हैं. P of B is n of P upon n of s. तो P of B is 6/11. Cancellation नहीं होगा. Final answer. Probability that the goalie will be selected is 1/11 and that the defender will be selected is 6/11. प्रॉब्लम सेट का 5th और 6th सम सेम इसके जैसे ही करना है. नेक्स्ट सम इजी है. 4th सम मिसलेनियस का है. जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप बेयरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच. यानी कैप है और हर कैप के अंदर उसने एक एक कार्ड रखा है. कैप में एक कैप में 26 कार्ड रखे हैं और हर कार्ड के ऊपर अल्फाबेट लिखा है. 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल. यानी कि जो कार्ड निकालेंगे वो वॉवेल आने का चांस क्या है. तो सिंपल है. तो 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 26 कार्ड बेयरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट. तो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. यहाँ पे लिख सकते हैं सैम्पल स्पेस A B C D E ... XYZ. n of s इज इक्वल टू 26. इवेंट क्या है, कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल. तो A इज इक्वल टू A-E-I-O-U. कॉमा डालने भूलना नहीं. तो n of A इज इक्वल टू 5 आया और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज n of A अपॉन n of s. तो 5/26. कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल इज 5/26. A bag contains the last sum है आज का. A bag contains 3 red, 3 white, 3 green balls. 1 ball is taken out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is red, not red, either red or white? तो सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना लिख दो. 3 + 3 + 3 9. लेट S बी द सैम्पल स्पेस. तो n of s 9 आएगा. अभी रेड बॉल. इवेंट A क्या है, द बॉल ड्रॉन इज रेड. तो रेड बॉल कितना है, देयर आर 3 रेड बॉल्स. तो n of a इज 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज n of a अपॉन n of s. तो 3/9 तो 1/3. बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड. तो नॉट रेड है तो ग्रीन भी चलेगा, वाइट भी चलेगा. 3 वाइट है और 3 ग्रीन है. तो 3 + 3 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू n of P अपॉन n of s. तो 6/9 कट करके 2/3. और लास्ट इवेंट है द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और वाइट. रेड भी चलेगा, वाइट भी चलेगा. तो देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स. तो टोटल n of C 6 बॉल्स आएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ C n of C अपॉन n of s 6/9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 2/3. और एंड में सारे जो फाइनल आंसर है ये लिखना पड़ेगा. तो इससे ये सेकेंड लास्ट लेक्चर हो गया प्रोबेबिलिटी का. अब थोड़े जो सम्स हैं जो कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट है वो मैं कल करूँगा एंड दैट विल एंड प्रोबेबिलिटी. फिर हम लोग और कोई चैप्टर लेंगे अलजेब्रा का पहले, फिर ज्योमेट्री करेंगे. बाय.